Example number 1, given tan A is equal to 4 upon 3, find the other trigonometric ratios of angle A. Okay, so tan A is given to us as 4 upon 3 and tan का जो ratio रहता है, that is the ratio tan A is equal to the ratio of the perpendicular, this one already diagram is there, perpendicular upon the base. Okay, so tan A is perpendicular upon base, this is the perpendicular and this is the base, it is 4 upon 3, so this is 4 and this is 3. Okay, so tan A is, so 4 upon is, tan A is perpendicular upon base, so perpendicular is CB upon base, CB upon AB is equal to 4 upon 3. And in this triangle, we are supposed to find the other trigonometric ratios, but before we go to that, let us find the hypotenuse. Okay, so perpendicular CB is given as 4, base AB is given as 3, and we have to find the hypotenuse. So in any right angle triangle, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Okay, so hypotenuse over here is AC square is equal to perpendicular is CB square plus base square, that is AB square. So AC square is CB square upon plus AB square. CB is 4, so AC square is equal to 4 square plus 3 square. So AC square is equal to 16 plus 9, which is equal to 25, and therefore AC is equal to, taking square root, AC is equal to 5. Now we have found the third side also. Hypotenuse मिल गया है हमको. And now let us find the other trigonometric ratios. Sin A. Sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. Sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. So this is equal to, perpendicular side is AB and hypotenuse is AC. Perpendicular is CB upon AC. CB is 4 and hypotenuse is 5. So this is 4 upon 5. Let us find cos A. Cos A is equal to base upon hypotenuse. So base is AB upon hypotenuse is AC. Base is 3 upon 5 is hypotenuse. So ये दो हमारे पास trigonometric ratios और find हो गए. So sin A is equal to 4 upon 5. Cos A is equal to 3 upon 5 and tan A is equal to 4 upon 3. ये 3 ratios हमारे पास आ गए हैं. अब हमको cot, cosec और cot निकालना है. Cosec A, sec A and cot A. मैंने ये ratios इनके नीचे इसलिए लिखे हैं so that we can understand that sin का जो cosec A है that is the reciprocal of sin A, sec A है that is the reciprocal of cos A and cot A है that is the reciprocal of tan A. Reciprocal के अलावा we can also write it as cosec A can be written as 1 upon sin A. Sec A can be written as 1 upon cos A and cot A can be written as 1 upon tan A.
Okay, so cosec A is 1 upon sin A, यानी 1 upon 4 upon 5, which is actually 5 upon 4, and then the reciprocal of sin A only. So this is 5 upon 4. Sec A is equal to 5 upon 3, and cot A is equal to 3 upon 4. Okay, so the given ratio was just tan A. Okay, now with the help of Pythagoras theorem we could find the hypotenuse, and then after finding the hypotenuse we have found all other 5 trigonometric ratios: sin A, cos A, cosec A, sec A and cot A, and this is the answer of our first sum. Example number 2. If angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q. We have drawn two triangles, triangle ACB and triangle PRQ, where angle B and angle Q are acute angles. Angle C and angle R are the 90-degree angles. Okay. We are given that sin B is equal to sin Q. Okay. Sin B is perpendicular upon hypotenuse, that is AC upon AB. So sin B is AC upon AB is equal to sin Q. Again, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is PR and hypotenuse is PQ. Okay, so AC upon AB, AC upon this is PR upon PQ. This would also imply that AC upon PR is equal to AB upon PQ, and this is equal to some constant known as K. Now let us find the side BC and QR in the triangle. Okay, so we know that as per Pythagoras theorem, AB, the hypotenuse square, is equal to AC square plus BC square, and PQ, the hypotenuse in this triangle, the square of this is equal to square of this PR plus RQ. Okay, so AB square, we know that AB square is equal to AC square plus CB square. Okay, and AB square minus AC square is equal to CB square. Okay, and under root AB square minus AC square is equal to CB. Okay, ट्रायंगल ACB जो था उसके लिए ये लिया था. अब now for triangle PRQ in the same way, there the hypotenuse is PQ, so PQ square is equal to PR square plus RQ square. Okay, and PQ square minus PR square is equal to RQ square. Okay, now under root PQ square minus PR square is equal to RQ. CB और RQ फाइंड करने का रीजन क्या है? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू नाउ. हमने अभी तक इसके प्रीवियस स्टेप में रेशियोज लिए थे AC अपॉन PR, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन द परपेंडिकुलर, AB upon PQ, AB upon PQ, that is the hypotenuse upon the hypotenuse. We never had base upon base. Okay, so हमने base ले लिया, यहाँ पे find कर लिया base की क्या value है दोनों जगह पर, and now we'll take the ratio of CB upon RQ. CB upon RQ is equal to AB square minus AC square under root upon RQ is PQ square minus PR square under root.
ओके, यही वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी है अभी. ओके, नाउ AB minus AB square minus AC square upon PQ square minus PR square, both the numerator and denominator are under the root. Okay, now let us go back to the ratios of the sides that we had taken, AC upon PR, that is perpendicular upon perpendicular, and hypotenuse upon hypotenuse. यहाँ पे हमारे पास था AB upon PQ is equal to K. So AB can be written as K into PQ. From this, if we just take this part, we can say that AB is equal to K into PQ, and I can replace AB here with K into PQ. So this would become K square into PQ square, and in the same way AC here upon PR is also equal to K. So this can also be taken as ये वाला AC upon PR, and if I equate it to K, I will get it as AC is equal to K into PR. ओके, AB की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ PQ, K into PQ. AC की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ PR, K into PR. Example number 3. Consider triangle ACB right angled at C, in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, and angle B is equal to theta. Determine the values of 1. Cos square theta plus sin square theta, and number 2 cos square theta minus sin square theta. Friends, यहाँ पे हमको एक triangle दिया गया, triangle ACB, in a way that angle C is 90 degree. AB, the hypotenuse, the side opposite to 90 degree angle, is 29 units. BC, the base, is 21 units. AC is not known to us. Angle B is theta. We are supposed to find the relationship between, we are supposed to find the sum of cos square theta and sin square theta, and we are also supposed to find the difference between cos square theta and sin square theta. अब इस सम को स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग, या स्टार्ट करते समय द फर्स्ट स्टेप दैट वी विल डू इज, हम पहले जो मिसिंग यूनिट है हमारा AC, दैट इज नॉट नोन टू अस, हम पहले वो फाइंड करेंगे, एंड दैट विल बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB, angle C is equal to 90 degree and angle B is equal to theta. CB, the base of the triangle, is equal to 21 units, and hypotenuse AB is equal to 29 units. AC is unknown. Okay, so AB square is equal to AC square plus CB square. So AB is 29 units, AC is unknown, plus 21. So this is 841 is equal to AC square plus 21 square is 441. So AC square is equal to 841 minus 441 is equal to 400, and AC is equal to under root 400. Therefore AC is equal to 20 units. Now we have found that AC, the missing one, is 20. Okay, now हमें अब फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा. फर्स्ट में दोनों का एडिशन लेना है, एंड सेकेंड में कॉस स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा को सबट्रैक्ट कर देना है. लेट अस फाइंड साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट. सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे. सो परपेंडिकुलर इज 20 एंड हाइपोटेन्यूज इज 29. सो साइन थीटा इज 20 अपॉन 29. साइन थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 29, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस इज
21 upon hypotenuse is 29. 21 upon 29. Okay, now let us find sine square theta. So this is 20 square, 20 upon 29 whole square, and cos square theta is equal to 21 upon 29 whole square. So sine square theta is 20 square is 400 and 29 square is 841, and cos square theta is equal to 21 square is 441 upon 29 square is 841. Okay, अब हम ये दोनों मिल गए. Now let us find first, that is cos square theta plus sin square theta, and second cos square theta minus sin square theta. Cos square theta plus sin square theta. So this is equal to 441 upon 841 plus sin square theta is 400 upon 841. So this is equal to 841 upon 841. So this is equal to 1. Okay. Now let us find cos square theta minus sin square theta. Cos square theta minus sin square theta is equal to 441 upon 841 minus 400 upon 841 is equal to, denominator same है दोनों में. This is 441 minus 400 and it is equal to 41 upon 841. This is the second part. Okay, so with the help of the details that we have found by using Pythagoras theorem, we are able to find out what is sin theta and cos theta, and then cos square theta and sin square theta addition, and then cos square theta minus sin square theta जो कि subtraction है, and this is the answer. Example number 4. In a right triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1, verify that 2 sin A cos A is equal to 1. फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल B is 90 डिग्री, and we are given that tan A is equal to 1. So we have to verify that 2 into sin A into cos A is equal to 1. Okay, so given triangle ABC and angle B is equal to 90 degree and tan A is equal to 1. So tan का formula is tan A is perpendicular upon base. Now tan A, that is ये वाला एंगल ये नॉर्मली हम इस ये वाले एंगल को कंसिडर करते हैं, देन वी फाइंड द रेशियोज. नाउ दिस इज द एंगल. सो इसके सामने परपेंडिकुलर लाइन कौन सी बन रही है? BC. ओके, सो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो BC एंड बेस इज ये, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. सो परपेंडिकुलर ये बन रहा है, बेस ये बन रहा है, BC अपॉन AB. So BC upon AB is given as 1 because tan A is 1. Okay. So tan A is equal to BC upon AB is equal to 1. Therefore BC is equal to AB. ये तो फर्स्ट रिजल्ट है जो हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया, जिसको हम आगे भी यूज करने वाले हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड cos and sin. Cos A and sin A, so that we can prove that 2 into sin A into cos A is equal to 1. बट हम sin A और cos A फाइंड करें तो हमें थर्ड साइड जो AC है वो हमारे पास नहीं है. वी हैव टू फाइंड AC. सो AC इज द हाइपोटेन्यूज बिकॉज इट इज अपोजिट टू एंगल B. ओके, AC इज द हाइपोटेन्यूज. सो एंगल B के अपोजिट में, तो AC इज द लॉन्गेस्ट साइड. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. AC square is equal to AB square plus BC square
So AC square is equal to AB square plus BC square. So AC can be written as AB square plus BC square under root. Okay. Now we have also proved that AB is equal to BC. Okay. तो हम यहाँ पे उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं. Now this will become AC square is equal to 2AB square or maybe 2BC square. So AC is equal to 2AB square. Okay. So AC is equal to AB into under root 2. यहाँ पे हमने ये AB के टर्म्स में फाइंड कर लिया, हम इसको BC के टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं. सो AC is equal to 2AB square under root, or this can also be written as 2BC square or BC into under root 2. ओके, ये समझ में आ गया हमको. नाउ लेट अस फाइंड द रेशियोज. रेशियो हमको मांगा गया है साइन ए एंड कॉस ए. ओके, साइन ए एंड कॉस ए. साइन का फॉर्मूला है, साइन ए का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेन्यूज है AC. ओके, सो वी विल टेक दैट. साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, सो साइन ए अगर हम कंसिडर करते हैं, ये अगर पॉइंट है ये एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसके सामने जो परपेंडिकुलर है वो BC है एंड हाइपोटेन्यूज इज AC. सो दिस इज BC अपॉन AC. सो दिस इज BC अपॉन AC. लेट अस फाइंड cos A. Cos A is base upon hypotenuse. So base is AB, ये थीटा है, तो हम AB की बात कर रहे हैं. AB upon hypotenuse is AC. AB upon AC. Okay. Now the relationship that you are supposed to find is 2 sin A cos A is equal to 1. To prove that 2 sin A cos A is equal to 1. Okay, let us put the values. 2 into BC upon AC, 2 into BC upon AC into cos A is AB upon AC. Okay. So here हम AC जो डिनोमिनेटर में है उसको रिप्लेस करेंगे. 2 इंटू BC अपॉन AC की वैल्यू क्या निकाली हमने, लेट अस सी दैट इन टर्म्स ऑफ BC. सो AC इज ऑल्सो इक्वल टू BC अंडर रूट 2. ओके, AC इज ऑल्सो इक्वल टू BC अंडर रूट 2. सो वी विल यूज दिस वैल्यू ओवर हियर अपॉन BC अंडर रूट 2 इंटू AB अपॉन AC. अगेन AC की वैल्यू AB की टर्म्स में भी निकाली है हमने. सो AC इज इक्वल टू AB अंडर रूट 2. ये भी है हमारे पास. ओके, सो दिस इज AB अंडर रूट 2. ओके, नाउ दिस BC and BC cancel, AB and AB cancel. So now we get is 2 into 1 upon under root 2 into 1 upon under root 2, which is equal to 2 upon 2, and when this is, so 2 into 1 upon under root 2 into 1 upon under root 2 is 2 upon 2 is equal to 1, and this is equal to RHS. Okay, therefore 2 sin A cos A is equal to 1. We have proved this. Example number 5. In triangle OPQ given in the figure, right angled at P, OP is 7 cm and OQ minus PQ is 1 cm. Determine the values of sin Q and cos Q. Okay, so we are talking about this angle.
ओके, सो हमें साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है. सो गिवन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एंगल P is equal to 90 degree, angle P is equal to 90 degree, and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q. So sin Q is perpendicular upon hypotenuse, and cos Q is equal to base upon hypotenuse. ओके, सो हमें जब साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, वी नीड परपेंडिकुलर, दैट इज गिवन टू अस. हमें हाइपोटेन्यूज और बेस भी फाइंड करना पड़ेगा, ओ क्यू भी फाइंड करना है, क्यू पी भी फाइंड करना है. ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस सम, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू दिस सम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर is equal to QP square plus PO square. Okay, now from this part OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. मैं यहां पे इसको रिप्लेस कर सकता हूं. OQ can be written as 1 plus PQ. This implies that OQ is equal to 1 plus PQ. ओके, सो ये PQ, ये जो PQ यहां पे है, हम यहां पे भी ले लेंगे, और QP में भी. सो दिस इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ और QP. 1 प्लस PQ और QP होल स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. ओके, so OQ square is equal to QP square plus PO square. Now OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. So OQ is equal to 1 plus PQ. वही हमने यहाँ पे किया, 1 plus PQ को 1 plus QP कर दिया यहाँ पे हमने. 1 plus QP whole square is equal to QP square plus PO square. Now let us expand the entire thing. 1 plus QP whole square is 1 plus QP plus QP whole square is equal to QP square plus 7 square. Okay, so 1 plus QP plus QP whole square is equal to QP square plus 49. Okay, so this gets cancelled. Okay, सो हमने QP स्क्वायर को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया. नाउ 1 प्लस 2 QP इज इक्वल टू 49. 1 प्लस 2 QP इज इक्वल टू 49. देयरफॉर 2 QP इज इक्वल टू 48 एंड QP इज इक्वल टू 24. Okay, now let us go back to the relation that we have. QP is 24. Okay, so यहाँ पे 24 आ जाएगा and OQ would become 1 plus 24. So OQ is 25. OQ is equal to 25. This is 24 and this is 25. That is what we have calculated it now. Okay, now sin Q is perpendicular upon hypotenuse. Sin Q is perpendicular 7 upon hypotenuse 25. Okay, let us write that sin Q is equal to 7 upon 25. Therefore, sin Q is equal to 7 upon 25 and cos Q is equal to base upon hypotenuse. Base is 24, hypotenuse is 25. So base is cos Q is 24 upon 25. So these are the ratios that we have found and this is the answer. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें
जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।